Now let's start the first session. The session is how to tackle racism and the problems of the Northeastern India, Northeasterns in the cities. Most of you are from Northeast India and most of you live in the city. Do you face racism? Or do we, the people of Northeast India, are insensitive to the customs and cultures of the rest? Or are we, the Northeasterners, divided amongst ourselves? We'd like to begin the day with this sensitive issue, and our guest is none other than Special Commissioner of Delhi Police, Robin Hibu. Joint Editor of Pratidin, Sunit Kumar Bhuya, will host this session. And before the proceeding, our customary felicitations to Sri Robin Hibu. Over to Mr. Hibu and Sunit Kumar Bhuya. Good morning, everyone. Robin Hibu. নতুন দিল্লীৰ ৰবিন হুড বুলি জানে যিখিনি ফটো আমাৰ পিছফালে সকলোৱে দেখা পাইছে বা আমিও দেখি আছো কেতিয়াবা মনত ভাৱ হয় কোনো কোনো সময়ত যে সঁচাকৈ আমি এইখন দেশৰে হয়নে সম্ভৱতঃ 2013 বা 2014 চন নিদু তানিয়া সেই সময়ত যিখিনি প্ৰতিবাদ হৈছিল তাত এখন ছবিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল যিখন ছবিত ভাৰতবৰ্ষৰ মেপখনত উত্তৰ পূবত এটা প্ৰশ্নবোধক চিন আঁকি শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছিল এতিয়া সেই কথাখিনিকে আজি মুকলিকে অকণমান পতাৰ চেষ্টা কৰিম ৰবিন হিবু বৈষম্য কেনেকৈ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ প্ৰব্লেম সমস্যা কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিব পাৰোঁ উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মহানগৰসমূহত প্ৰথমতে মই এটা কথা আপোনাক জনাওঁ যদিও আমি প্ৰায় আধা ঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে বহু ছাত্ৰ বন্ধু আমাৰ মাজত আছে তেখেতসকলৰ বহু প্ৰশ্ন থাকিব আমি প্ৰশ্নখিনিৰো সন্মুখীন হ'ব লাগিব পোনপটীয়াভাৱে গোটেই অনুষ্ঠানটো মই আপোনাৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিম পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছাত্ৰ অৱস্থাৰেই হওক যে সঁচাকৈয়ে উত্তৰ পূবৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক বা অন্যান্য ব্যক্তিবিশেষেই হওক মহানগৰসমূহত বৈষম্যৰ বলি হয় কিয় হয় প্লিজ I hope I am audible to all of you. First of all, सबसे पहले मैं आपसे माफी चाहता हूँ. We had our Prime Minister's emergency, so I had to be there. Anyway, I just somehow made it and I reached here. First of all, I must appreciate this initiative. कहते हैं कि घोड़े को अगर पानी पिलाना है तो आप कुएं के पास ले चलना है लेकिन आज कुएं समथिंग लाइक ए चल के घोड़े के पास आया है अदरवाइज असम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हम रह के बस मोस्ट ऑफ द टाइम अनफॉर्चुनेटली गलत हेडलाइन के कारण हमें जाने जाते हैं एंड वेरी ग्लैड दैट कि आपका प्रतिदिन यू हैड नाउ मेड ए वेरी गुड प्रेजेंस एंड आई एम वेरी ग्लैड कि बाकी सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही सिर्फ नहीं यहाँ दिल्ली वाले भी मैं कल आई वॉज ब्राउजिंग इन द इंटरनेट ऑल्सो तो बहुत अच्छा दैट हैज बीन बिगिनिंग हैज बीन मेड यस देयर आर इश्यूज इट्स अनफॉर्चुनेटली द डिग्री ऑफ प्रॉब्लम व्हिच वी फेस बाय द people from the northeastern cities are a little bit different from our Indians or from other people. Geographically, we are far away. Everybody knows that. But somewhere or other, लगता है कहीं ना कहीं जो majority of the people at a lower level
हमने भी फेस किया है प्रॉब्लम, एंड दैट प्रॉब्लम I can go on and on, but I would just precisely say in a very succinct way. First is that बहुत लोगों को हमारे नोटिस का बारे में नहीं मालूम है. नंबर वन, हमारा रहन सहन का बारे में इतना जानकारी नहीं है. नंबर थ्री, उनका भाषा को ज़्यादातर खास तौर से नागा, मिजो, मेघालय एंड इवन फ्रॉम त्रिपुरा भाषा नहीं बोल पाते हैं. रहन सहन थोड़ा अलग है. और दूसरी बात, जब हम वहाँ से निकालते हैं 8 स्टेट से, तो हमें बावान तो है, मानते हैं उनका भी बहुत, तो वो भी अपना जो कुछ कर सकता है कर रहे हैं, लेकिन वो रीच आउट पर जो गैप रह जाते हैं, खास तौर से द यंगर जनरेशंस. माइग्रेशन इज मैसिव. जिस आप अपने घर से उस सपनों को साकार करने के लिए तो यहां तो आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद में जिस हालात में आपको उसमें जीना है, उसे एडजस्ट करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना है, उसमें कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं, क्योंकि मैं 20 साल से इस नॉर्थ ईस्ट इशू को लेकर एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए एनजीओ, एज एक्टिविस्ट, एज ए स्टूडेंट लीडर मैं देख रहा हूं. वन इज दैट कि समवेयर और अदर हमें लगता है, हम जो वहां से निकाल के आने के बाद में हमें भी महसूस हुआ कि आई हैव बीन अबंडन्ड बाय माय बैक होम स्टेट. जब बाबान में आते तो आई नो दे आर वेरी बिजी, उनका भी लिमिटेशन है. नंबर वन. नंबर टू, हम चाहे पुलिस में जाओ या कहीं भी जाओ, एक तो हम भाषा नहीं समझते हैं, जिसके कारण वी आर बीन समवेयर और अदर एक स्ट्रेंजर की तरह, मतलब एक बाहरी जैसा. वो जो नीचे लेवल वाला स्टाफ वो नहीं दे पर इंटरेक्टिव वाला हो, जो मेरा दिल के दर्द को वो नहीं समझ पाता है बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज, लैक ऑफ ये जो है ना. दूसरी बात, फिर उसके बाद में अगर मोस्ट वरीसम इज दैट लेबर वाला जो इशूज, उसका स्किल ट्रेनिंग वेरी गुड विथ वेरी नोबल एम आ तो जाते हैं 6 महीना 1 साल करने के बाद में, ट्रेनिंग करने के बाद में. लेकिन यहाँ आ जाने के बाद में ऐसे एनजीओ, ऐसे इन माय पर्सनल कैपेसिटी आई डिड एनालिसिस कि ये स्किल ट्रेनिंग जो 8 स्टेट से आ जाते हैं, उनके साथ ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? बिकॉज आई हैव ए डाटा बैंक, आई कैन गो ऑन एंड ऑन. इसका व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि वी आर समवेयर और अदर, आवर what is called problem is higher than others. I'm not saying कि हम अकेला झेल रहे हैं, नहीं, बाकी भी झेल रहे हैं, वो अलग बात है, बट हमारा प्रॉब्लम अलग है. जैसा मैंने शुरू में कहा, वन रीजन इज दैट पोस्ट स्किल ट्रेनिंग के बाद में देयर इज, आई हैव रेड मेनी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स what is called policy and program and MOU for the skill training. आपको स्किल ट्रेनिंग के बाद में देयर इज नो फर्दर मॉनिटरिंग कि जिस बच्चे को आपने स्किल ट्रेनिंग दिया है आगे में क्या कर रहे हैं. इज ही गेटिंग द व्हाट इज कॉल्ड ऑल द रेम्यूनरेशंस, उसका प्रमोशन का स्कोप क्या है, डज ही हैव द स्कोप फॉर फर्दर व्हाट इज कॉल्ड स्किल ट्रेनिंग सो दैट ही कैन बिकम ए लिटिल गेट प्रमोशन इन लाइफ. जैसा अभी हमारा फॉर एग्जाम्पल लाइक ये साउथ दिल्ली में मॉल है, उस मॉल में आई हैव 2079 सेल्स बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. आई एम इन टच विद देम, मैं मिलते रहता हूँ उनका थ्रू माई ओन एनजीओ एंड थ्रू आवर सर्कल ऑल्सो. उनमें से आई डिड एनालिसिस ऑफ दिस 2079 जो नॉर्थ ईस्ट से जो सेल्स गर्ल या सेल बॉय है या जो स्मॉल लोअर लेवल पे, number one, they are in unorganized sector. Number two, they have no forum, they have no organization. Number third, जैसा उनको 6 महीना पहले असम में, गुवाहाटी में, कलकत्ता में 6 महीना 7 महीना स्किल ट्रेनिंग दिया था, उसके बाद में आपका तो आगे का क्या चलना है क्या नहीं चलना है, यू हैव बीन लेफ्ट ऑलमोस्ट इन द समथिंग लाइक दे आर इन द जुरासिक पार्क. और जिसके कारण जो अभी मैं कह रहा था, एग्रावेटिंग फैक्टर, लैंग्वेज नहीं समझता है, खान पान थोड़ा अलग है. अरे यार, हम तो मेरे लिए लड़की लड़का एक साथ बैठना, हम तो नागालैंड में कोहिमा में या जीरो म्यूजिक फेस्टिवल में, फॉर मी प्लेइंग म्यूजिक होल नाइट विद ए गर्ल इज नॉट एट ऑल स्ट्रेंज फॉर मी. बचपन से हम लेके, जबकि यहाँ का जो खास तौर से लुटियन दिल्ली को छोड़ के जो बाकी है, इट इज मोर और लेस लाइक रूरल एरिया ओनली. दैट इज वन. टू,
जब मुसीबत में पड़ जाते हैं तब तो बस राम भरोसा पे उसका जिंदगी हो जाता है. अगर हॉस्पिटल में एक्सीडेंट होकर मर जाती है या एक्सीडेंट होके कहीं पड़ी हुई है, because everybody is not connected with the so-called our unions, community union, tribal union, your even Baban, or even back home also नहीं हो पाते, तो वो एक हट के चले जाते. So what I am speaking and what I am standing for in the cities is for all those उनके लिए जो नोटिस वाला लड़का या लड़की या स्टाफ जो काम करने वाला के लिए कि जिनका आके यहाँ अकेला हो जाते हैं, लाचारपन महसूस होते हैं, कोई साधारण जिसको कि वो अपना दुख सुख को बांट सके उसको जगह नहीं मिलता है. मिलने भी अब जाते भी है तो आई नो पुलिस आर देयर डूइंग देयर बेस्ट, वुमेन कमीशन आर देयर, बट somewhere or other वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते. और दूसरी बात, it's a very horrendous analysis which I find, which I must share with you, that we did an analysis of 1,000 spa girls from the Northeast in Delhi, in NCR. हम अपना research team, helping and volunteer को भेज के यार, these are the parameters, जाके देख लो what are problems they are facing, what have been their experience, what can be done more. आपको सुन के ताजुब लगेगा, out of 100 में से आपको 60 persons were not regularly employed in the spa of the cities, including Gurgaon. उनको कहते हैं कि तुम्हारा हम आपको प्रोफेशनल में रखेगा, कितना कस्टमर आएगा उसका आपको 50% मिलेगा. So these are indicative of how helplessness our boys and girls, spa is only one of the job. उसी तरह से then we found them एक छोटा सा something like you can't even imagine a small room in a petty hotel like a Daryaganj, maybe in Gurgaon, even in Ghaziabad. So these are indicative of our though we have our labor lawyer with us also, there is a very very elaborate what is called system of the redressal forum in the labor law and so on and so forth. ये इसलिए नहीं कर पाते हैं कि बिकॉज आपको जितना भी जो स्किल ट्रेनिंग आपको जो दिला रहा है उसमें से उसका जो है ना वो ये दिला रहा है, इसका जो है ना वो नहीं करते हुए भी उसको अवेयर नहीं है. तो इसीलिए वी हैव सजेस्टेड इन डिफरेंट फोरम, even in the Bej Barua committee. Yes. Which will be I want to come that point. Yeah. You are the one of the special member of this committee. GOVT initiative. MP Bej Barua committee to report. Groundot আজি তাৰিখত visible হয় নে? Look, Bej you are Barua, one of the key person of that committee. Bej Barua committee, the background you know it well, after brutal killing of Nido Tanya in Lajpat Nagar. उसके बाद में हमें भी one of the members in the Bej Barua committee, it had elaborate recommendations right from for all the stakeholder, government, NGO, people, and all others. Even we have consulted with others, what is called stakeholder from the Northeast, not only from Delhi, but from other part of the cities also. Exactly. Yes, some of them have been very successfully implemented. Like in Delhi, we have now a Northeast police unit where our boys and girls are manning this unit along with other policemen from other part of the country. Number one, we have helpline 1093 that has been successfully done. Then second, what we have done, we have a special recruitment from the Northeast where we send our Delhi police team, and we have a special recruitment from the Northeast, and now we have more than around 2,400 boys and girls are, manning the cities of Delhi, and that process is continuing. And third, even for NCRT, for the law, changing of the law, it is a very, very elaborate, which is not in my domain, but there is a monitoring committee in the MHA, implementation of the Bej Barua committee, where I am not the member, where others are member, and they are monitoring by every now and there is a review meeting of that. Sir, helping hand, yours helping hand, and কোভিড পিৰিয়ডতো আমি দেখা পাইছোঁ বা বিভিন্ন সময়ত হেল্পিং হেণ্ডে বহুতখিনি কাম কৰি আছে, কিন্তু মই আপোনাক খুব খোলাকৈ সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম ডিৰেক্টলি. আমি কওঁ
যে আমি ৰেচিজিমৰ সন্মুখীন হৈছোঁ কিবা হৈছোঁ আমি ক'ৰবাত ছেল্ফ এনালাইচিছ কৰাৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে নেকি কাৰণ আপুনি যিটো হেল্পিং হেণ্ডৰ মাধ্যমেৰে যিখিনি কাম কৰি আছে থ্ৰু হেল্পিং হেণ্ড ইউ হেভ এ লটছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ এই যিটো ছেল্ফ এনালাইচিছ কৰাৰ আমাৰ যিটো প্ৰয়োজনীয়তা সেইটো আপুনি কিদৰে আপোনাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা ক'ব উইথ এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই পাৰিলে অসমীয়াত ক'ব আপুনি ক'ব পাৰে নাই ক'ব পাৰে কিন্তু মই সেইকাৰণে মই অসমীয়াত নকওঁ বিকজ আই ৱান্ট যি মই কৈ আছে যি মই আইডিয়া আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰি আছে বাকী নৰ্থ ইষ্টবিলাকে বি শুনিব লাগিব মাত্ৰ অসমৰ নহয় নৰ্থ ইষ্ট ডাজন্ট বিলং অনলি অট আছাম দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য কনচেপ্ট উই আৰ অল দ্য টাইম গুৱাহাটীত বোলে মানুহ গ'লে বোলে নাই আমি নৰ্থ ইষ্টত গৈছোঁ হোৱাট দ্য হেল आर यू यार तू पहले तो जुनूब तो जाके तो देख के आ जाओ जीरो जाके तो देखे आओ अरे गुवाहाटी और जोरहाट तो बिहार पटना लखनऊ जैसा है यार with due respect I have a great respect for Assamese so knowingly I am speaking in Hindi यार इस देश को आगे बढ़ाना है तो ठीक है we have respect for Assamese all our language लेकिन उस भाषा को बोलो ये जो लार्ज नंबर लोग समझते हैं अगर मैं महाराष्ट्र में जाएंगे ठीक है मराठी को आई हैव टू रेस्पेक्ट बट अगर मराठी के बाहर अगर करना यू हैव टू एड्रेस अदर्स सो अलाउ मी टू स्पीक इन हिंदी ओके नंबर 1 यस हेल्पिंग हैंड कल के एक एनजीओ हम लोग खोल रहे हैं आई एम लीडिंग इट वी हैव अदर IAS IPS सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड एंटरप्रेन्योर्स रीजन बिहाइंड इज दैट आपने ठीक राइटली पॉइंट आउट किया कि क्या हम अपना आप को भी पहले चिंतन करना पड़ेगा कि आर वी ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ व्हाट इज कॉल्ड मिसफॉर्च्यून और हैपनिंग और somewhere or other you are not able to fit into the city's atmosphere और milieu जहाँ जिस वातावरण में आप जिसमें रोटी रोजी कमाने के लिए आप यहाँ आ रहे हैं उस रोटी रोजी का माहौल में आप क्यों समान नहीं हो पा रहा है उनका दिल को क्यों जीतने पा रहे यू आर वेरी वेरी ट्रू इसमें मैं हर रोज हमारा हेल्पिंग हैंड का वन ऑफ द स्ट्रेटेजी है कि सबसे पहले तो मैंने तो हेल्पिंग स्किल ट्रेनिंग में क्या मैंने तो बोल दिया है पहले आप अपना आप को भी तो अपना आत्मा से अपना राम से पूछो कि यू आस्क योरसेल्फ आल्सो कि क्या मैं अगर मैं मुंबई का दायरा में अगर मैं रहने जा रहा हूं या दिल्ली का अगर बुरारी में रहने जा रहा हूं आर यू अवेयर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर नंबर 1 so there is no incubation training whenever anyone is coming out from northeast number 2 हमारा भी बिल्कुल even I am from JNU and DU unfortunately पता नहीं somewhere or other अपना नोटिस वाले जो हम अपना में रहने के लिए ज्यादातर में पसंद करता है अरे यार मैं माय एडवाइस इज दैट कि यार जिस जगह में भी जाएगा उस जगह का आप भाषा सीखो अगर पंजाबी है तो बल्ले बल्ले तुम भी अरे भाई सखी में नाचो उसके साथ में अगर वो दिवाली है तो तुम दिवाली उनके साथ में मनाओ अगर आपका व्यू चल रहा है तो आप भी उसको व्यू डांस सिखाओ यार कैसे मटक हिला हिला के अगर वो अपना वो फेस्टिवल हो तो उस फेस्टिवल में आप भी उसको शामिल करो एक्समास है तो आप भी उसको बुलाओ प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल हेवंते माने निजोर निजोर ताकि कि नहीं पोर्क बनाए की करके ओनली अनटू देमसेल्फ मोस्ट ऑफ द अनफॉर्चुनेटली नंबर 1 नंबर 2 जब आप भाषा नहीं सीखेंगे आप उसको कैसे कम्युनिकेट करेगा आई नो वो लोग हंसेंगे जब आपका एक्सेंट को छोड़ करके बट एटलीस्ट दे विल से कि यार हमारा भाषा तो कोशिश कर रहा सीख तो रहा है थर्ड देन you once you learn the language once you interact them in day to day basis in a positive way and I believe every one of the northeast people whoever कहीं भी हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान से बाहर में है हो उस स्टेट उस राज्य का उस ट्राइब का उस कम्युनिटी का तुम एम्बेसडर हो because they cannot go and see the आओ from Nagaland अगर 2-3 आओ अगर बुरारी में है या मुनीरका में है तो उनका जो सोल वाला आपका आसामीज मेकेला पहन के तो यू आर द एम्बेसडर फॉर योर स्टेट सो हियर लाइज आवर रोल ऑल्सो कि हम भी अपना आपको दूसरों को उंगली ये नहीं है वो नहीं करने से पहले वी शुड ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड आवर सेल्फ देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरी ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम जो प्रॉब्लम बताया वो तो है ही है कि जिन्होंने जहां भी रहे हैं उस जगह को अपना बना लिया है उस पड़ोसियों को अपना मान लिया है उस जगह को क्या कहते हैं ना अपना से भी जन्म तो हुआ है असम में या कोहिमा में या मणिपुर में या ईटानगर में लेकिन वो अपना दिल्ली में या कलकत्ता में या इवन मुंबई में बना लिया सो यू हैव टू बी ओपन अप योर माइंड
इंटरेक्शन करना है, लैंग्वेज सीखना है, उसका कल्चरल इथोस को एडॉप्ट करना है. ऑफ कोर्स जैसा बापू ने कहा, यू अलाउ फ्रेश एयर टू ब्लो, ऑफ कोर्स विदाउट लूजिंग योर आइडेंटिटी. आपका व्यू को भी रखो, लेकिन आप भी बैसाखी में पार्टिसिपेट करना है, होली में पार्टिसिपेट करना है. हियर वी आर lagging what is called in our way. Of course, but one thing, hey, but let me complete. Skill training, I think your channel is very popular in the Northeast. Skill training ke baare mein kabhi na kabhi, I'll suggest this, Pratidin. You must have a separate session for the, what else skill training, how can we improve it more? Yes. Okay. Sir, ये जो सेल्फ एनालिसिस के क्वेश्चन में कर रहा हूँ. अभी गुवाहाटी, between Guwahati and Itanagar, what is the basic difference? You already said. What is the difference, just according to your point of view, what is the difference between Guwahati and Itanagar? What is the difference between Aizal and Jorhat? What is the difference between Imphal and Tezpur? देखो डिफरेंस आप जो कह रहे हैं, अब जो एक तो ये है कि तुम्हारा यू आर लकी है, অসম বিলাকৰ বিৰাট লাকি মানুহ আছে, তহঁতে চিধা এয়া কানেক্ট উইথ এভৰিথিং, ইউ আৰ ইটস অলমোষ্ট লাইক এনি अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज. लुक एट ईटानगर यार. मेरी माँ को मुझे जाने के लिए जीरो, आई बिलोंग कम फ्रॉम जीरो, आई टेक 4 days टू रीच टू मीट माय मदर यार. आपका तो बस सेम डे होगा, सेम डे यू कैन कम बैक टू दिल्ली. सो देयर इज ए मैसिव गैप of your Guwahati and other part of our northeastern state. One, geographically you are well placed, you are well connected and everything, you are each hub of business, so on and so forth. अरे यार ईटानगर आइजल तो सबसे पहले तो नंबर वन, आई फील, दिस इज माई ओन फीलिंग, कि सबसे पहले दुनिया में कहीं भी जाओ, आई वॉज विद द प्रेसिडेंट, सो आई हैव ऑलमोस्ट विजिटेड 28 countries. कहीं भी जाओ, आई ऑलवेज टेक आउट, जो भी फ्री टाइम होगा, आई गो अराउंड एंड सी द रूरल रोड. किसी भी जगह में जाओ, दिस अप्लाई टू आवर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल्सो. यार उसको जगह को सबसे पहले कनेक्टिविटी कर दो ना, कुछ नहीं चाहिए, अच्छा रास्ता बना दो, अच्छा कनेक्टिविटी कर दो, और नागरिक अपना आप संभाल लेगा. दिस इज वन एरिया आई स्ट्रांगली फील that connectivity is the prime bottleneck for our going ahead in every, either in education or in business or anywhere. Number one. Number two, because I don't have, I can go on and on. You can't compare. Yeah, you are, Assam has a, Itanagar, Kuchit, Dinis, they've started as capital of the country. So I can only say that since Assam is the elder brother of the 8 northeastern states, आपका भी धर्म बनता है, फर्ज बनता है, आप सिर्फ गुवाहाटी में सिर्फ मत रहिएगा. And since I come from Arunachal Pradesh, we are greatly admirer of Assamese people because it's you who came first. हमें education दिया, राह दिखाया. कितने लोग अभी जो कुछ अरुणाचल में है, I want to express my really a deep gratitude. Bhupenda was favorite place अरुणाचल में आकर के कितना गाना कंपोज किया. So we have an emotional bonding as अरुणाचली, वो अलग बात है. But my point is that since it is a very right forum, you should discuss something on as 8 sisters. 8 sisters. And even this is what on your channel, I am telling them, ki, let it be, Pratidin should not be only for Guwahati and Asomiya matro karone nohobo lagibo. You should try to find out, why not Pratidin for the Northeast, yeah? Why only for your Brahmaputra belly of the Ahom? Over to you, Sunit. Sir, Minala question আছে যদি আপুনি মোক ক'ব, মই আৰু মোৰ দুটা ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন আছে, তাৰপিছত মই কুৱেশ্যনেৰিলৈ আহিম. The rule of bhavans, the rules of Assam House, Arunachal House, Arunachal Bhavan, is it proper working to resolve the problems of Northeastern region? Be clear. देखो, it will not be appropriate for me to comment on the function, how Bhavan are functioning. But I can only just give a little bit of suggestions as a personal thing, as a personal experience for last 20 years in Delhi and metropolitan city. One, I think you need to have a separate rejag or cell to connect the youth in the Bhavan. Youth means those who are coming for student, those who are getting the job and the skill training, so on and so forth. This area I feel is one area Bhavan can take initiative, number one. Number two, I think Bhavan need to have a more proactive reach out through social media because the youth are very, very, tuned in today's world with the social media, what is called connectivity. So these two things can, once you start this, I think then other thing can
open up for many others way. And yes, the third point, I strongly feel that Bhavan can be the center for the incubation center. Why only helping in यार? हम तो छोटा मोटा अपना ड्यूटी करके कभी 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके अपना उसमें से awareness campaign करते हो अलग बात है. But you are an institution. You have been given all the infrastructure, logistics, so on and so forth. So Bhavan can play a catalytic role to fill up this gap of this whatever I have narrated. Some of them have. And to proactive role to guide our entrepreneur, guide our student, guide our people whenever they are in trouble. And for that, you need to involve the student also. Why not have a youth interactive group, something like that, in Assam Bhavan, apune missing bhi rakhibi, bodo bhi rakhibi, Asomiya bhi rakhibi. Tetya mane, then you can have a very good, you can maybe in a fortnight or once in a month, Milo, have a meeting, interaction. What is your problem? Everything is okay. Sometimes, you can, they can be your good foot soldiers to reach out to your people who are working in an unorganized sector in the cities. At least for Delhi, start to karlo, number one. Number two, like helping in. We are having a blood bank. I mean, kiman blood bank every 3 months, moyu di tako. Kitu kune Asomiya bole na aaye. Jetya lagile mur pispine lagi Robinda the blood lage. So I'm not trying to say good or bad. My point is that if even you have a medical representative in your Bhavan, why not that medical representative can be also? I'm not telling you helping hand के साथ जुड़ो हो नहीं कह रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ यार आपके पास I have made a directory of our people in Delhi and in some of the major cities. Why can't you have that kind of a repository, of course, voluntarily? I'm not asking it to forcefully have registration. Since there are student union, community organizations, अलग-अलग का उनका संस्था है, उनको अगर उनका कम से कम प्रेसिडेंट ने जनरल सेक्रेटरी अगर मिला के अगर एक साथ एक छोटा सा इंटरेक्टिव ग्रुप इन द Bhavan में अगर Bhavan अरुणाचल में या इवन इन द असम Bhavan, then that can be a very good, I would say, via media to sort out this small issue. They'll give the idea how to, what is called, intervene in this issue. Then why not, even this is one point I always feel, when I was in Bhavan, I always tell our resident commissioner, many of my batchmates, even to some of our CM, कि sir, कुछ भी करो एक युवाओं के लिए एक hall to बना दो. If you don't want to give, अगर बिस्तर भी नहीं देते मत दीजिए, एक hall बना दो ताकि एडमिशन के समय में जो वो अगर विजिट करने के समय में कम से कम 10, 15, 20 जहाँ रह सकें. Because I remember bitterly from my personal experience. When I came in Delhi, I had no one in Delhi. So I went to the RC. उन्होंने बोला कि बेटा रूम नहीं है क्या करेगा? Then चौकीदार told me कि नहीं सर एक गोदाम है उसमें थोड़ा सा जगह है आधा प्याज आधा आलू है. He can sleep there. I said no problem. मेरे लिए दिल्ली में कोई जानकारी है नहीं. I went there. I sweep that what is called that half of the room. आधा was प्याज, आधा was filled up with aloo. Only one pan and with no ceiling. It was almost like a dungeon or like a jail. So my point is that because had I not got that godam, I would have, हम कहाँ जाते? कम से कम गोदाम में तो सोने का मिलकर आज IPS तो बन गया. So my point is that in whenever you create a Bhavan, आप expansion करते Bhavan or Assam Bhavan 1, Arunachal Bhavan 2, either you have so many buildings are coming up. There my request will be make one hall for the student and the youth. One for male, one for female. A small one where at least these who have got no connection, जिसका सिफारिश नहीं है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, लेकिन वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें भी तो मौका दिया जाए, तो भी होगा जब कि आप इस तरह. Then third point, last point regarding Bhavan, you must have a student time to time, at least during the admission time, during the like COVID time, you must reach out here. Reach out means proactively reaching out to our people, so that at least आप कुछ दे ना दे, लेकिन उन्हें तो पता होने दो कि चलो अपनों में एक है. अगर मुझे कुछ ना भी दे, उनका दिल मेरे लिए धड़कता है. तो उसे अगर उसे कोई सर्विस भी ना मिले, उम्मीद तो रहता है कि चलो अपना कोई है जो हमें पूछता है. Why only you are leaving it to like enjoy like helping and only, at least in Delhi and NCR. Yes, Sumit. Mrinalda, I will just process of research. Actually, this question has no direct relation to our subject, but I want to ask this question. Do you think and believe Assam and Assamese has
big brother attitude among the states of Northeast region? There is no doubt you are a big brother. Big brother attitude. No, no, मैं आ रहा हूँ. Exactly. पहले आप बड़े भाई तो है. Attitude में yes, I won't comment on all those controversial issue. लेकिन ये 2-3 बातें मैं जरूर कहूँगा. यार आप बड़े भाई है तो छोटे भाई को छोटा इशू को लेकर के ना, you should have that giving attitude. यार क्या फर्क पड़ता है यार, ले लो यार. Number 1. Number 2, जब भी आप अपना असम में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, तो आप ये भी तो मान के चलो यार, आप ये जो कर रहे हैं, क्या मेघालय को क्या इसका लाभ होगा, नागालैंड के लिए क्या लाभ होगा. नॉट गवर्नमेंट, फॉर अ कॉमन पीपल, मे बी इन अ ब्लैक बॉर्डर. अगर रास्ता बना रहा है तो यार हमें अच्छा लगेगा यार. उस जैसा ईटानगर या गोपुर या इवन जहाँ भी जो अनफॉर्चुनेटली जो अननेसेसरी जो ये मेरा वो तेरा ये नहीं वो नहीं जो हो रहा है, उसको अगर आप अच्छा रास्ता बना देगा तो आई वुड ओनली से कि यार इंक्लूसिव हो. हमें भी यार, क्योंकि हमारा रिसोर्सेज इतना जितना आपका पास तेल है, जितना आपका पास बिजनेस, हमारे पास 7 बहनों का पास हम लाचार है, हम बेसहारा है यार. हमें थोड़ा सा तो आपको बड़े दिल दरिया दिल से तो दो, हमें साथ में लेके चलिए. नंबर 1. नंबर 2, आई थिंक नाउ असम का और भी एक फर्ज बनता है. जब हम बचपन में जब हम स्कूल में जाते थे, वी यूज्ड टू लर्न असमीज. Many scholars from Guwahati University आकर के हमें पढ़ाते थे, अच्छा लगता था, इंटरेक्शन होता था, स्कॉलरशिप होता था. आज तो आप तो बिल्कुल अकेला हो गए यार. अब तो हम तो बड़े भाई हो गया, हम तो आगे निकल गया. अभी तो असमीज को अनफॉर्चुनेटली वो जो, इसीलिए मैंने सोचा कि नाउ आई एम प्रोपोगेटिंग, आई एम गोइंग टू फॉर्म अरुणाचल असम फ्रेंडशिप फोरम, समथिंग लाइक दैट. यार उनका जो, हाउ कैन वी फॉरगेट. इवन आई एम थिंकिंग इन जीरो वी आर planning to make one Bhupen Da statue so that we'll write his history कि उन्होंने हमारा अरुणाचल के लिए क्या, उसका हमारे लिए क्या attitude था. So that is one point कि that you must set up scholarship, आकर्षित करना है ताकि आसामी सीखे. आप जितना भाषा सीखेंगे उतना ही, खासतौर से जो बॉर्डर एरिया में अननेसेसरी जो इधर का इधर उधर हो रहा है, उसमें put up scholarship, have a common cultural meeting. When I was SP at Itanagar, মই তো सबक जिमान इटानगर उसरत जिमान एसपी আছে सबक माती किनी, ओसिक माती किनी, आमी बिहु डांस भी करिसे, आमार पोनुंग डांस भी करिसे. समथिंग लाइक दैट, कल्चरल एक्सचेंज ऑफ व्हिच elder brother Assam has a major role to play. Last point, let me say, आप जब आपका कल्चरल आइकॉन है, जितना भी है, समवेयर और अदर हम पहाड़ों में भूलते जा रहे हैं. आपने तो, आपका पुरखों ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन उसको जारी रखने के लिए आपको यू हैव टू टेक लिटिल मोर एक्स्ट्रा स्टेप टू रीच आउट टू अस, ताकि हमें लगे कि हाँ अपना भाई अभी भी हमें प्यार करते हैं, अभी भी हमें हमारे लिए सोचते हैं. थैंक यू. मैं এইখিনি কথা অসমীয়াতে কওঁ যে মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই বান্দৰদেৱাৰ পৰা মোৰ ঘৰ বান্দৰদেৱাত, গতিকে একদম একেবাৰে জানো মানে কথাটো মই, আৰু সেইকাৰণেই কথাটো আপোনাক সুধিলোঁ. মৃণাল দা, আমি কুৱেশ্যন এনচাৰলৈ যাওঁ. বহুতো ষ্টুডেণ্ট আছামিজ ষ্টুডেণ্ট নৰিলাৰ আছে, হয়, আৰু যদি আমি পাৰোঁ মৃণাল দা 2-3টা কুৱেশ্যন একেলগে লৈ ল'ব পাৰোঁ, যদি একেটা ৰিলিভেণ্টৰ কুৱেশ্যন পাওঁ উত্তৰটো দিবলৈ সহজ হ'ব তেতিয়া. মৃণাল দা, মাইক্ৰফোন মৃণাল দা অকণমান ওপৰত লওক. Ponki Bordole. Hi, good afternoon, sir, and everyone present here. My name is Panki Bordole. So my question for you is that, is there any antidote for racism? Look, Bordole, I'm very glad Gopinath Bordole की याद दिला दिया आपने जना. Thank you so much. You know, no, we have a lot of love and affection. Yeah, problem है आप लोग भूल गए हमें, हम नहीं भूला है. Number 1, देखो, racism is a unfortunately worldly phenomenon. It sprout out somewhere or other. Racism बल्कि institutionally इस देश में तो constitution is given as a right equal to everyone. जैसा मैंने आपको बताया, इसके लिए इलाज ये है कि आपको नंबर 1 तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करना है. जो भी whatever we are equal in all the, I don't have to go back, we all are equal, there is no racism, there will be no racism, वो तो है ही है. बट प्रॉब्लम है कि जैसा निडोतान्या हुआ, सलोना हुआ, सांगमा हुआ,
बेंगलोर एक्सोस हुआ, आज भी कुछ ना कुछ बीच बीच में होते रहता है, हमें भी बोलता है. इवन आई टू फेस दिस रेसिज्म व्हेन आई वाज a student at Delhi University. बोलता था बहादुर costo show. I don't feel bad. Initially I was a very get irritated because I thought they are looking down at me this and that. लेकिन बाद में जब पता चलता है ये काका करोल बाग दुकाने वाला तो गाजियाबाद के बाहर गया ही नहीं जिंदगी में, 10वीं क्लास पास भी नहीं है, इस गधा का बोलने वाला हम क्यों दुखी होना है यार. Bagmita. So then to add this racism, I would only say if somebody cast a racist slur on you or discriminate you, number one, first of all, don't react negatively. अरे उन बेचारों को अता पता नहीं है कि हम पंजाबी वाला बोले सोनियल हमारा देश बगीचा की तरह पंजाबी ये भी हिंदुस्तानी है, मेरे जैसा छोटे आंख में नागालैंड या इवन अरुणाचल है. सो टेक पॉजिटिव वन. नंबर टू, उसके बाद भी करता है तो देन वी आर देयर, वी विल कम डाउन विद अ वेंजेंस. दिल्ली पुलिस में वी आर व्हाट इज कॉल्ड creating awareness in every young officers. Even I'm sending my ACP in state called DYSP to the Arunachal and Mizoram. देख के तो आओ, because they will be the subdivision. So number one, number two is अगर कोई करता है तो you must resist back. Inform your organization, inform your what is called whatever is your channel in the student union, or inform to us, or call 112 in anywhere in the country, or 1093 in Delhi. So don't worry, we are with us. We will not let it happen. कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाता है तो don't कास्ट लड़ के दिल्ली वाला कास्ती से रेसी से. नो, अरे हमें भी कितना मोहब्बत करने वाला दिल्ली में है. कौन कहता है हर किसी दिल्ली वाले के पास दिल नहीं है. यही लोग तो हमें खिलाया जब कोविड ने. देयर वाज नो वन. यही लोग तो राशन दिया, सब कुछ दिया. सो बी पॉजिटिव, वी आर डीलिंग इट, वी विल डील इट, वी आर विथ यू. उन गधों को उन जिसे अकल नहीं है उनको माफ कर दो. डोंट वरी, विल गो अहेड. थैंक यू. Since we are running behind the schedule for almost 45 minutes, all the panelists of the next session has already arrived. So I have got about 6 or 7 questions, but I will be able to only pick one. Please don't mind because all the dignitaries are waiting there. Last question, only question is from Bagmita Bautakur. Where is you? Where are you? Bagmita. Very good morning, sir. Sir, you very well answered the big brother attitude, and sir, you also mentioned how our people find it difficult to accommodate. So my question to you is, do you think the idea of extremist, rigid regionalism in the states of Northeast might be a reason for this? No, I don't think in that way. I feel संस्कार इस धरती पे कहीं भी परिवार हो, और रिजिडिटी बोल के नोटिस में कहाँ रिजिडिटी है. प्रॉब्लम ये हो जाता है कि प्लीज अलाउ मी टू एक्सप्रेस, आई एम नॉट सेइंग एज ए IPS ऑफिसर और एज ए स्पेशल कमिश्नर. अरे हमारा छोटा भाई बहन, तो आप जब गुवाहाटी से जलपाईगुड़ी जो पार कर लेते ना, ज्यादातर लोग सोचते हैं आई एम लिबरेटेड. यू लीव, आई शुडंट से दिस वर्ड, यू फील कि अभी तो मेरा कोई नहीं है. सो यू नो, अपार्ट इनफैक्ट आई फील द संस्कार जो शंकरदेव जुने आमी दिसे, আমার যিমান পাহাড়ত আমি দিছে simple, honest, these are the ingredient that makes you a better person. Point ये है कि आप जैसा आप मणिपुर में कहते हैं कि वो लोग तो बहुत ये है वो है, अपना उसको ये मानते वो मानते. अरे यार, उसी को तो आप पॉजिटिव वे में यहाँ ले आकर के उसी डिसिप्लिन जो संस्कार है उसको सीखो. ये रिजिडिटी माँ पिताजी का, डोंट ब्लेम आवर बैक होम स्टेट. प्रॉब्लम इज विथ यू. प्रॉब्लम इज विथ यू. कि अरे हम तो कल क्या होगा, अब जिंदगी का ले लो मजा. If you take this attitude, let me tell you, my dear young student, I always tell this word, put last word. Think of after 5 years. Where will you be? आप कहाँ रहोगे? अच्छा मौका है, आप नसीब वाले दिल्ली में आए, पढ़ने को मिल रहा है, जॉब करने को मिल रहा है. Make best use of it, yeah. City has got a lot of opportunity, positive and negative. It's up to you what you take. अगर आप रात भर पार्टी करते रहेगा और सुबह 11 बजे 12 बजे उठेगा तो तेरा जिंदगी कहाँ होगा यार. IPS बनने का आज दिख रहा है कितना पसीना मेहनत के बाद किया है. 14-15 आवर्स से डे सब कुछ. जब JNU में तो एक बार भी पार्टी नहीं किया है, एक बार भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, एक बार भी इधर नहीं किया, तभी तो बना है. सो जस्ट इस एवरीथिंग लाइज इन योर हेड, एवरीथिंग लाइज इन योर एटीट्यूड. थैंक यू. মই আচলতে আমি ছাৰ 45 মিনিটছ
আমাৰ লেট হৈছে আৰু মই মেগে বিশেষকৈ মেগে আছাম এছ'চিয়েশ্যনৰ যিখিনি নতুন দিল্লীৰ তেওঁলোকক স্পেচিয়েলি মাতি আনিছিলোঁ প্ৰশ্ন কৰিবৰ কাৰণে মই ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী তেখেতসকলৰ ওচৰত কাৰণ সময়টো আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে যি কি নহওক এদিন ছাৰ আপুনিও সময় দিব লাগিব তেখেতসকলৰ লগত কিছু কথা বতৰা পাতিব লাগিব আৰু চল্ভ কৰিব লাগিব এই খণ্ডটো ইমানতে সামৰণি পৰিছে আৰু এটা অতি আকৰ্ষণীয় দ্য ইছ্যুজ লাইক ড্ৰাগছ টেৰৰিজিম ইনচাৰ্জেঞ্চি লাইক দিজ কেনেদৰে উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই বিষয়ে ক'ব লেফটেনেণ্ট জেনেৰেল ৰাণা প্ৰতাপ কলিতা স্পেচিয়েল DGP GP সিং সঞ্জয় হাজৰিকা সুবিমল ভট্টাচাৰ্যী সকলোখিনি আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি গতিকে আমি সেই ছেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ থেংক ইউ ছাৰ